So let us start with our lecture number 3. And before starting today's lecture, let us revise the concepts that we have studied in the previous class or yesterday's class, right? So yesterday we have seen in intrinsic semiconductor, in thermal equilibrium, we have number of holes as well as number of free electrons available, and in intrinsic semiconductor, number of holes are equals to number of electrons. There we have also seen that number of holes or number of electrons can be taken as equals to Ni, where Ni is number of free electrons and holes per unit volume, right? And we have used a formula that is Ni is equal to Bt raised to power 3 by 2 e raised to power minus Eg by 2 kT for calculating this Ni, right? And since this Ni is equals to P and it is also equals to N, where P and N are number of holes and number of electrons. So if in any of the question, if it is asked to find the number of holes or number of electrons in any intrinsic semiconductor material, then by using this formula only, you will be able to find that, right? Simply जो Ni का आपके पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप नंबर ऑफ होल्स के लिए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए you can use the same formula, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू Ni होते हैं, और Ni कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला है. यहाँ पर B हमारे पास सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है, T is the absolute temperature at in degree Kelvin, Eg is the energy gap, and K is Boltzmann constant, right? Now, we have also seen drift current. We have seen what happens when an electric field E is applied to a semiconductor crystal. क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में? तो फ्लो करने राइट. बेसिकली वी हैव सीन कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो भी होल्स हैं उनका रैंडम मूवमेंट होता है जब तक हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते. ऑल्दो वी हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड में और होल्स हमारे पास वैलेंसी बैंड में हैं, लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, और जब तक वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, राइट? देन when we will apply an electric field E, holes are accelerated in the direction of E and free electrons are repelled. Here repelled means they will be flowing in the opposite direction of the electric field E, right? Now we have also seen how to find the velocity of these holes. If any one of you can answer for that, to define the velocity of these holes, and yesterday we have seen that this velocity is nothing but the multiplication of the mobility of holes multiplied with the electric field applied. That we have represented as V, and for holes, and this is our drift velocity, right? This is drift velocity for holes, which is the mobility of hole multiplied with the electric field applied. Similarly, if we are interested in finding the velocity of electrons, that is mobility of the electron multiplied with the electric field applied. And here minus sign is because the electrons will be moving in opposite direction to the applied field. Now, here we have also seen E will be represented in volts per centimeter. Mobility is centimeter square per volt second. This is for hole and this is for electron. And if you look into the values of mobility in case of silicon as well as in mobility of holes for silicon as well as mobility of electrons for silicon, then mobility of holes is 480 and for silicon it is 1350. कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे होल्स की मोबिलिटी कम क्यों होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, राइट? नाउ from this relationship, since we are going to calculate the velocity that is equals to mobility into electric field, तो अगर velocity की हम बात करें तो what will be the relationship between velocity of hole or velocity of electron in your semiconductor material? By looking into the values of mobility of these, mobility हमें दिख रही है
इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, ई की वैल्यू सेम रहेगी दोनों के लिए, लेकिन होल्स की मोबिलिटी कम है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? So from here we can say that velocity of holes will be less than that of the electrons. ठीक है? होल्स का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी से कम होगा, एंड कितना कम होगा? दैट इज it is nearly 2.5 less than that of the electrons. अगर हम होल्स की बात कर रहे हैं तो होल्स की जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी से 2.5 टाइम्स तक कम होगी, बिकॉज होल्स की मोबिलिटी कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर रिलेशनशिप लगभग 2.5 का रिलेशनशिप है इनके बीच में, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो होल्स हैं से replied you with this formula, right? लेकिन अगर डेफिनेशन की बात करूं तो Ni is nothing but the number of free electrons and holes per unit volume, and we can calculate this Ni by using this formula, that is Pt raised to power 3 by 2 e raised to power minus ag by 2 kt, right? यहाँ से जब आप Ni की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और क्योंकि आपको पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स दोनों इक्वल होते हैं एंड दे आर इक्वल्स टू Ni, तो अगर आपको नंबर ऑफ होल्स निकालना है या अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और नंबर ऑफ होल्स निकालिए, तो आप लोग वहां पर कई बार स्ट्रक हो जाते हैं, आप वहां पर स्ट्रक हो जाते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालने हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालने हैं। बट अगर आप वहां पर रिमेंबर करें कि आपके नंबर ऑफ होल्स भी Ni के बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी Ni के बराबर है, एंड Ni का फॉर्मूला आपको पता है, दिस इज b t raised to power 3 by 2 e raised to power minus eg by 2 kt, so you will be able to find the number of holes as well as number of electrons, and but this is the case for intrinsic semiconductor material. Now हमने बात करी थी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होल्स हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। और हम यहाँ पर अगर होल्स की वेलोसिटी की बात करें तो हमारे पास जो रिलेशनशिप था, दिस वेलोसिटी इज मोबिलिटी मल्टीप्लाइड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। If we are talking about holes, so this will be the mobility of holes multiplied with electric field applied. And if we are talking about the electrons, the velocity of electrons due to drift is mobility of electrons multiplied with the applied electric field. Then we have seen that mobility of holes is less than that of the mobility of electrons. Yesterday we have discussed the reason behind that. एंड वहां पर हमने देखा था कि एक एग्जांपल में लाइक हियर द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज 480 एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1350, एंड सिंस दिस मोबिलिटी इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वेलोसिटी, and for this velocity which is equals to mobility of holes multiplied with electric field applied, this is the velocity of your hole, and the velocity of electrons will be the mobility of electrons multiplied with electric field applied E. And since from this we can see that since mobility of holes is less than that of the electrons, by substituting this value into this relationship, we will say that the velocity of holes will be less than that of the electrons. E constant है हमारे पास, तो हम जब यहाँ पर मोबिलिटी के टर्म्स में कैलकुलेट करने जा रहे हैं वेलोसिटी को, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से हमें पता चलता है कि हमारे होल्स की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन से बहुत कम है। और कितनी कम है? दैट इज नियरली 2.5 लेस देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको याद रखना है हमेशा और हमेशा कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज्यादा है, और बेसिक रिलेशनशिप की बात करें तो इट विल बी नियरली 2.5 हायर देन दैट ऑफ द होल्स। देन हमने देखा था कि एक बार एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश किया बाय अप्लाइंग सर्टेन वोल्टेज अक्रॉस अ सिलिकॉन बार्स, देन व्हाट विल हैपन, आवर होल्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। Yes, Man, J equals to sigma into E. Yes, definitely your current density is equals to conductivity into
applied electric field, right? Or we have seen this relationship in terms of charge also. If Q is the charge of your electron, P is the number of electrons, mu is the mobility of, sorry, I'm saying electron and I have written for holes. We are interested in finding the current density for the holes. So that will be charge of the hole multiplied with number of holes multiplied with mobility of holes multiplied with the external electric field applied, right? Yesterday we have seen this relationship. Now, if we have to find the current component because of the flow of the electrons, that will be nothing but Q and mu and E. Q is the charge of the electron, N is the number of electrons, mu N is the mobility of the electron, and E is the applied electric field. And we have also seen that the total drift current is nothing but the summation of the drift current due to holes plus drift current due to electrons. And here we have represented the current densities. So the current density, total current density will be the summation of these two, and that will be equals to, by substituting the value of Jn and Jp from the previous slide, we have derived this relationship. Okay. Now, if you look into this relationship, yesterday we have seen that this J is equal to sigma E, where sigma is the conductivity. So from here, we can conclude that the conductivity is nothing but Q multiplied with summation of P mu P and N mu N, right? This is conductivity, and conductivity multiplied with electric field will give you the current density, right? Is it okay till this point? Yes, okay. ma'am. Screen is visible, voice is audible, and no disturbance at all? Yes, ma'am. Okay. Now let us proceed further. Yes, ma'am, all clear. Right. Thank you very much. Now we have seen that conductivity, the relationship between the current density and conductivity is J is equal to sigma E. In the previous slide, we have seen the relationship. This sigma is equals to Q into P mu P plus N mu N, right? And one more term that we may have to calculate sometimes, that is resistivity. And resistivity is nothing but 1 upon conductivity. So with that, if we have to find what is resistivity in terms of current density and applied electric field, and since this conductivity is 1 upon rho, substituting in this relationship, we will get current density is equal to applied electric field divided by the resistivity, right? And if we have to calculate the resistivity, that will be 1 upon Q times of P mu P plus N mu N, as it is given over here. Okay. Now, till now, what we have seen for intrinsic semiconductor, number of free electrons is Ni and number of holes is Pi. For p-type doped semiconductor, number of free electrons is Np and number of holes is Pp. This terminology I will be going to use in further slides. जब हम p-type semiconductor की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट लगा दिया है p. और n का मतलब हमें पता है कि होल है, वो इलेक्ट्रॉन है, और p का मतलब हमें पता है कि होल है. तो this subscript is for p-type material, ये जो p यहाँ पे लगा हुआ है, this is for electron and this is for hole. तो अगर हम p-type semiconductor की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमने np लिखा है, तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम होल की हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं in p-type semiconductor. Subscript is representing which type of semiconductor, right? Similarly, अगर यहाँ पर pp लिखा हुआ है, that means holes in p-type semiconductor. ऐसे ही अगर हम n-type semiconductor की बात करें, so this small n is for n-type. Here in both, you can see it is as a subscript. This n is number of electrons and this p is number of holes. तो ये टर्मिनोलॉजी अगर आप याद रखेंगे, कहीं पर भी Ni लिखा है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. अगर Np लिखा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं p-टाइप सेमीकंडक्टर में, और अगर Nn लिखा हुआ है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं n-टाइप सेमीकंडक्टर में. Similarly, अगर Pi लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ होल्स इन I-टाइप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अगर Pp लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ होल्स इन p-टाइप सेमीकंडक्टर. एंड अगर Pn लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ होल्स इन n-टाइप सेमीकंडक्टर, राइट?
So in some of the next slides we may use this type of terminology. तो उस समय आपको देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है, NI तो हमें बार बार